हेलो वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड फ्राइडे को वीडियो नहीं डाला था बट आई टुक अ बुलिश पोजीशन इन निफ्टी 50 एंड आई वेंट टू कॉल्स एज पर माय डिसाइडेड लेवल जो था कि 24,100। तो उसके ऊपर जैसे ही इधर ये क्लोजिंग आया तो मैंने शिफ्ट कर दिया कॉल्स में और फ्राइडे को होल्ड किए वो कॉल्स। और आज तब से ही मैंने स्टॉप लॉस ये डिसाइड किया था 24,000। तो आज ये आया, इससे नीचे आता तो शायद मैं आज ट्रैप हो जाता पूरा। बट या सेव्ड माई सेल्फ 24,000 से सपोर्ट आ गया। तो अभी चल रहा है एट कॉस्ट है पोजीशन। लेट्स सी एंड सेम स्टॉप लॉस फॉर द डे और मे बी दिस ट्रेंड लाइन दैट वी आर सीइंग आई बी लुकिंग एट दिस टू होल्ड ऑन फॉर टुमारो। अगर ये कंटिन्यूड रहता है, इसके ऊपर रहता है, तो मे बी 24,100 इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ एंड दिस ट्रेंड लाइन फॉर मी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं, इसके ऊपर रहता है तो कॉल्स को होल्ड करेंगे फॉर ट्यूसडे, वरना पुट्स में आ जाएंगे। जीडीपी डेटा बहुत ख़राब है बट एक्चुअली व्हाट आई बिलीव कि वो पहले से फैक्टर्ड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये फॉल आया होगा मे बी ऑन थर्सडे वाला फॉल, या फिर जो फॉल है जो 26 टू 50 से शुरू हुआ था, वो भी फॉल शायद जीडीपी का फोरकास्ट की वजह से हो। एंड नाउ दैट इट इज़ ओवर, हम नेक्स्ट क्वार्टर का देखते हैं। जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो शायद अभी देखेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा रहेगा। दे विल बी मैचिंग द नंबर्स, दे विल बी फिगरिंग आउट द फेयर वैल्यू ऑफ निफ्टी 50 और मे बी शायद बाइंग हो जाए। क्योंकि ये जो नीचे से हुआ है, जो फ्राइडे को जो रिजेक्शन ऑफ द दिस डाउन ट्रेंड और गैप फिल होके एक्चुअली ऊपर आया है, तो वी कैन गो फॉर द अप ट्रेंड। इसी वजह से जो ये अप ट्रेंड मेरे अकॉर्डिंग जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा था, वो इधर से जो बॉटम बना है इधर से फ्राइडे ऑन 22 नवंबर से अप ट्रेंड शुरू हो गया था फॉर अ लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। अभी वो कैसे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता, मैं कैसे डाउन ट्रेंड में देखता उसको, इसके नीचे। तो ये जो गैप फिल हुआ और इसके नीचे अगर ये शुरू रहता तो फॉर मी इट वुड हैव बीन अ डाउन ट्रेंड, बट नाउ बैक टू अप ट्रेंड फुल क्वांटिटी कॉल्स के साथ। और अब देखते हैं क्या होता है। रिगार्डलेस, लेट्स गो टू द कमेंट्स। ओह नो, हाउ कैन आई गो टू कमेंट्स? इधर वो मेरा रिकॉर्डिंग का स्क्रीन चल रहा है। ओके वेट, ओपन अ न्यू टैब। स्टूडियो। बाकी टुडेज फॉल वाज क्वाइट की भाई। कॉल्स में सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे सुबह ही 9:30 तक, वो इट वाज वेरी टफ। सो इफ़ दैट हैपेंड, इट इज़ वेरी नॉर्मल, ऐसा ही होता है। तो डोंट फियर इफ़ यू गॉट आउट ऑफ द कॉल्स। ये होता रहता है, मेरे साथ भी होता। अगर नया लो आता तो आई वुड हैव बीन ट्रैप्ड बोथ साइड्स, में भी मेरा मैक्स लॉस डे भी हो जाता आज। तो लेट्स गो to the previous videos comments and answer a few of them. uh, I have filtered it to contains questions. Okay, first one is, what is your profession of your father? Basically currently he is also looking into the same system, we both are focused on this, and the current idea is that we will increase the quantity, keep increasing the quantity, keep increasing the risk and exposure, और जो भी प्रॉफिट आता है वो इसमें री इन्वेस्ट होता जाए। और दैट इज़ होल आइडिया, दैट इज़ द होल आइडिया। इसको मेन थिंग ही करना है, द सेम स्ट्रेटजी, कीप ऑन, नॉट द आइडिया of increasing the points, but the idea would be to increase the quantity to get further profits. Hi Dhrutik, hello. Currently I am trading with only one lot. On much profit, should I gradually increase quantity? Do you have any formula for the same? Okay, so if it is options buying and if you have good returns, I think you should wait, because if it has good returns, it will have high risk also. So you should wait कि नेक्स्ट लॉट का जो प्रॉफिट हो वो आप मतलब आप प्रॉफिट अर्न करो, फिर ही उसमें से ही नेक्स्ट लॉट ऐड करो। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डिड, बट आई टुक एक्स्ट्रा रिस्क ऑल्सो। मैं ऐसे ही ग्रेजुअली इंक्रीज करता गया था उसके बाद भी। बट या इफ़ यू डोंट वांट टू इन्फ्यूज योर ओन कैपिटल, इफ यू डोंट वांट टू टेक मोर रिस्क, बिकॉज इफ इट वर्क्स विद वन लॉट, इट इज़ गोइंग टू वर्क विथ 1,000 लॉट ऑल्सो।
But the idea is कि when you are doing one lot, you earned 500 points. But when you are doing two lots, when you lose 250 points, it's all gone. So your risk reward when you increase quantity will be messed up. So look look at it in a other way. If it is selling, then I don't know. Then I don't know because the returns will be less, and I don't know how you can increase quantity in it because one major dent and that's a wipe out. Yes, your accuracy is 37%. Any view on that? How much percent you make annually? Uh, Accuracy is 37%, but current ROI in this FI is 200%. So yeah, 37% is fine enough for me. I guess 30% is also fine for me. Even if it decreases by the end of FI, I would be fine with it. That is totally normal in options buying. And if you see any trend followers, there is a trend follower on showcase in long-term PNL. You will see second or third guy who has less accuracy but has crores. But since you asked for the percentage, it is 200% for now. Last year it was 100%, but that's not when I was using this strategy properly. I was not doing things properly because I have made lots of modifications after that. But 100% was last year, and to this year it is 200%. It might decrease by the end of FI, it might increase by the end of FI. We don't know that. I'm not claiming that I'll be ending with 200%, 300%. Let's see, even if it ends with 100% again this year, I don't mind. It's fine, totally fine, because I managed my risk and I got my returns. I'll be looking forward to increasing the quantity next year, increasing it a lot. Hi Dia, how do you decide the direction of market, whether it is bullish or bearish? I don't predict the future. For example, I didn't know the bullish trend has started when I saw. Okay, when I saw it on Thursday. It was Thursday. Sorry, it was Friday. Yeah. So Thursday, we can see from here. I took puts. That's when this candle came. So it is bearish. I see and then I react. So I bought the puts here. I didn't book it here. I didn't know it would be a reversal from here. Obviously, if I knew it, I would have booked it. बट नहीं किया वो. और इधर से मुझे 24,100 जब कॉस्ट प्राइस पे आ गया, तो वी कैन से दैट वी शुड मैनेज दैट रिस्क. वी शुड नॉट बी रिग्रेटिंग कि वी लॉस्ट द ओपन प्रॉफिट्स, बट वी शुड बी फोकस्ड मोर ऑन व्हाट द नेक्स्ट मूव इज़ गोइंग टू बी. सो आई वेंट फॉर द कॉल्स, और अभी देखते हैं वो सस्टेन हो गया है. आई एम नॉट सेइंग कि कॉल्स में ही पैसा मिलेगा. दैट्स व्हाट आई डोंट प्रेडिक्ट. सो करंटली the uptrend for me has been continued by this low. There is a higher low and there could be more higher lows. We confirm the uptrend. If there is a lower low, we cancel it. We are good to go with puts then. That's it. Higher low, lower low, or maybe just like these previous levels that we see. That's all important for me. But yeah, the execution based on it, based on your view, is very tough. Is very tough. So when I was here, obviously I bought calls, but after buying the calls, the market could have reversed, and I could have faced a big stop loss here. But then that is the risk we take. So that's why I wait extra to confirm that. But waiting extra might incur big losses also. So I keep my SL bigger, so to not trade much. I want less number of trades, and I want to hold throughout a big trend. That is the whole idea. How you pyramid your trade and how you trail or SL? I don't pyramid my trade, but currently I started working after reaching 5,000 quantity. I started working out on a bigger time frame because this downtrend didn't fetch me good amount. This downtrend from 26 to 50 didn't fetch me good amount because of these up moves that came in between, where I bought calls and lost a good amount of money in calls. So yeah, so I changed my strategy. I started playing with the quantity. For example, currently I was buying 6,000 calls and 4,000 puts, which helped me in reducing my losses in puts. So that's how, when currently I have 6,000 calls, so I will not be pyramiding. And maybe if there is a downfall, if there is a downtrend starting soon, I'll be going with 6,000 puts only, and then going for 4,000 calls. So this is what I'm playing with. Some other thing right now, I'm working on it. Maybe the execution will be different. If it works out, very good. If it doesn't work out,
it's okay, I'll shift to something else. So I'm just testing something right now. Let's see if it gets executed properly. Chirag bhai, તમે ટ્રેડિંગ ક્યાંથી શીખ્યા? Any plan for starting course? बेसिकली ही इज़ आस्किंग मैंने ट्रेडिंग कहाँ से सीखा और मैं कभी कोर्स स्टार्ट करूँगा. तो मैंने सीखा था ऑब्वियसली बेसिक्स तो मेरे फादर से, एंड देन द ऑप्शंस थियरीज एंड एवरीथिंग ऑल द थियरीज, all the actual knowledge I got it from Varsity by Zerodha. It is perfect. I mean, it changed everything, the way we think about premiums and all. And it just clearly mentions everything, how there is ITM, how there is OTM, and why you shouldn't, like, why ITM is always preferred, क्यों प्रेफर होता है हमेशा ITM मेरे लिए. और जैसे कि आप स्ट्रैटेजीज़ में देखोगे, सब आपको प्रीमियम स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जब आप पढ़ोगे उसमें, तो इट विल नॉट ओनली गाइड यू अबाउट ऑप्शन स्ट्रैटेजी बट हाउ द प्रीमियम्स मूव. तो दैट विल अफेक्ट, that will make your live trading better, because you have learned something very deep. And now I'm doing naked options buying, so that thing, the movement of premiums in my mind helps me in making plans, helps me in making my strategy better. तो यू शुड बी, आपको ना थियरी से एकदम वो होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए आपका थियरी. एनी प्लान फॉर स्टार्टिंग कोर्स? नेवर ब्रो, नेवर. आई डोंट थिंक एनी वन नीड्स टू बाय अ कोर्स, बिकॉज उससे कुछ नहीं होता. उससे हाँ प्रॉफिट होता है उससे कोर्स सेलर को, उससे ज़्यादा उससे कुछ नहीं होता. क्योंकि इफ़ अ कोर्स सेलर वॉज प्रॉफिटेबल ही वुडंट बी सेलिंग कोर्सेज, ट्रस्ट मी विद दैट. Even if he, for example, if there is a seller who is selling crores and crores, he's using crores and crores amount of money and selling, and everything is working well, he has a 70% accuracy, why would he be selling courses to you? Because he already has crores. If there is an option buyer who is a scalper and who is doing things, basically most of them are course sellers, so they want their backup plan actually, while they know okay it's not going to work out. So yeah, don't buy courses, everything is free. My positions are live. For if you are looking to know about my style, my positions are live on Sensible, and this is where I'm sharing my views on YouTube. So yeah, never a course, man. It's everything is free. I mean, you just need Varsity and you just need a good strategy to work on with, and then your discipline, I think you'd be good to go with that. So that's it for today. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ये फ्राइडे को रह गया था तो आज डाल दिया, एंड लेट्स सी अभी कॉल्स में क्या होता है. और कल मिलते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स. लेट मी नो एनी कमेंट्स, एनी क्वेरीज, एंड आई रेड ऑल द कमेंट्स, गुड कमेंट्स, ऑल द लव दैट यू आर शेयरिंग, आई लव इट. थैंक यू वेरी मच for your support. Goodbye and see you in next video.